Hello guys, welcome to Tarkashastra. I am Aditya and in this video we are going to discuss about the strategy or preparation plan for management entrance exams like CAT, SNAP, CMAT and MBA CET starting from the month of June. So this is the first video of this series. Okay. So what are the exams which we are going to target? Are first of all CAT 2020 which will be conducted in the month of November. Then comes NMAT, which is conducted over a duration of October to December, 3 months, and you get 3 chances to appear for this exam. Best of 3 scores will be considered for the admission. Then comes SNAP, which is conducted in the month of December, and then comes MAT, which will be almost the last exam of this 2020 season. So, starting from 1st June, you have 30 days, and we are going to discuss what all topics you should prepare in these 30 days. Okay. So, for quantitative ability, as we have seen in the previous video, QA is basically divided into 5 sections, and the most important section is arithmetic. As per the analysis of previous CAT exams, out of 34 questions in QA, अरिथमेटिक पे कम से कम 14 to 15 क्वेश्चंस आते हैं, मिनिमम 14 to 15 16 क्वेश्चंस आते हैं, which is the heaviest topic amongst all the sections of QA. Okay, so that's why we recommend to start with the arithmetic topics. So these are the 6 topics: linear equations, ratio, proportion, variation, percentage, profit loss, simple equation, simple and compound interest, and mixture regulations. So these are the topics which you must prepare in the month of June. Then comes verbal ability. So verbal ability is basically divided into grammar and RC. Correct? So as we have discussed in our previous videos as well, you must divide grammar into at least 10 to 12 topics. Correct? Out of which you can prepare sentence, subject verb agreement and preposition conjunction. Okay, in the month of June. One topic per week. Okay, and along with vocabulary and RC, you can prepare vocabulary of at least 50 to 100 words in the first month. ठीक है, जैसे हमने प्रीवियसली भी बोला हुआ है कि रीड एटलीस्ट 2 to 3 articles per day, at least 2 to 3 articles per day from a very good newspaper, or you can also choose any book of your choice. Okay, so this will help you not only prepare for RC but also build your vocabulary day by day. So once you have chosen the topics of QA and VA, now moving forward to the topics of LR and DI. So these are the 4 topics of LR and 4 topics of DI which we have chosen for you to prepare in the month of June. Okay. So blood relation, direction sense, setting arrangement, sequencing and comparison, and matching and distribution. These are very important topics for CAT and all management entrance exams. Similarly, tables, line graph, bar graph, pie chart and mixed graph are very important topics for CAT. ठीक है. So अभी कैसे करना है? QA में जो आपको 34 क्वेश्चंस आएंगे उसमें से अरिथमेटिक पे, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, मिनिमम 14 to 15 क्वेश्चंस आएंगे. तो देयर आर मल्टीपल टॉपिक्स इन अरिथमेटिक. ठीक है, तो हमने पूरे के पूरे टॉपिक इन द मंथ ऑफ जून नहीं लिए. ठीक है, देयर आर फ्यू टॉपिक्स पेंडिंग विच विल बी कवर्ड इन द मंथ ऑफ जुलाई. ठीक है, देन VA के हमने 4 टॉपिक्स उठाए हैं एंड LRDI के हमने 4 टॉपिक्स ईच उठाए. Correct? This is how you are expected to prepare in the month of June. ठीक है, so आपको ये प्लानिंग कैसे करना है? Let us see. So you are going to prepare for VARC, QA and LRDI. So how will you prepare for VARC? This is not a procedure. This is not a subject which you can choose for 1 day per week or 2 days per week. नहीं, ये आपको डेली बेसिस पे करना पड़ेगा by reading the newspaper on daily basis, by collecting the vocabulary and building it day by day. At least 5 to 10 new words per day you must collect in your vocabulary. Correct? Then choose any one topic of grammar or RC. जैसे we have listed down 4 topics for the month of June. After preparing the topic, solve enough practice questions and
टॉपिक वाइज टेस्ट. ठीक है, सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू प्रिपेयर बीए. मूविंग फॉरवर्ड टू क्यूए. क्यूए के वन टॉपिक पर वीक अगर आप करोगे उससे नहीं होगा. ठीक है, बिकॉज क्यूए इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फॉर ऑल एग्जाम्स, नॉट ओनली फॉर कैट, फॉर ऑल मैनेजमेंट एंट्रेंस एग्जाम्स. एंड उसके अंदर टॉपिक्स भी बहुत सारे आते हैं. ठीक है, इन बोथ द सब्जेक्ट्स क्यूए एंड एलआरडीए. ठीक है, सो इट मेक्स सेंस कि आप कम से कम 2 टॉपिक पर वीक उठाओ. ठीक है, कंसेप्ट पढ़ने के बाद उस पर मिनिमम 50 to 100 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है ऑन ईच एंड एवरी टॉपिक. ठीक है, देन टेक टॉपिक वाइज टेस्ट. ठीक है, सिमिलरली गो अहेड विद द एलआरडीए. वन टॉपिक ईच पर वीक, मतलब वन टॉपिक फॉर एलआर एंड वन टॉपिक फॉर डीए. ठीक है, लर्न द concept and solve minimum 50 to 100 questions of various difficulty levels like easy, moderate and difficult. So the 100 questions must be divided something like 30, 40, 30, so that you get enough exposure to all the difficulty level of questions. Okay, then take the topic wise test. So this is the schedule which you must follow from Monday to Friday. Correct? 1, 2, 3 and 4, 5 topics, that is one topic per day, 100 questions per day. So from Monday to Friday you will have practiced more than 500 questions, plus there are different 30 to 40 questions of each topic wise test. That means in 1 week, only from Monday to Friday, you must have practiced at least 700 questions, correct, of various difficulty levels. Correct, so this will definitely boost your confidence on weekly basis. Okay, now how you should plan your week is learn 5 concepts from Monday to Friday, practice enough number of questions, at least 100 per topic, take topic wise test, 1 per topic, and when comes the weekend comes the mock test. Okay, this is our recommendation that you should take at least 1 mock test per weekend starting from June. क्यों? बहुत सारे लोग ये भी बोलेंगे कि क्या ये नेसेसरी है या नहीं है. There are various benefits of taking the mock test starting from the month of June. ठीक है, क्या होगा? एक तो पहले आपको मॉक टेस्ट कौन से लेने इन द मंथ ऑफ जून वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे, बिकॉज देयर आर 4 वीकेंड्स इन जून. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड टेक कैट on first weekend of June, then on second weekend of June you should take SNAP, then on third weekend of June you should take NMAT, and on last weekend of June you should take. Now let us discuss what are the benefits of this mock test. इससे क्या होगा कि let us say this will be the first mock test of all exams. करेक्ट, इसके पहले अगर आपने नहीं लिया रहेगा, सो जस्ट टेक दिस टेस्ट एज द बेंचमार्क टेस्ट. ठीक है, सो लेट अस अज्यूम कि आपको कैट में 300 में से 50 मार्क मिला. करेक्ट, स्नैप में 150 में से यू स्कोर्ड अराउंड 50 मार्क्स. करेक्ट, एंड मैट में समथिंग आपने कुछ मार्क्स स्कोर किया, मैट में कुछ मार्क्स स्कोर किया. ठीक है, सो इससे क्या हुआ कि यू विल गेट द बेंचमार्क स्कोर ऑफ ईच एंड एवरी एग्जाम, प्लस यू विल आल्सो गेट द इनफ एक्सपोजर. करेक्ट, आपको पता तो चलेगा whether this is my cup of tea or not, then only you can go ahead with the further preparation. करेक्ट, नहीं तो कभी कभी ऐसे भी होता है कि आपने कभी कैट के प्रॉब्लम्स कभी देखे ही नहीं थे. ठीक है, जस्ट बिकॉज योर फ्रेंड इज गोइंग टू अपियर फॉर कैट यू आल्सो फिल अप द फॉर्म एंड आप भी कैट के लिए चले जाते हो. इससे क्या होगा कि कैट से थोड़ा इजी एग्जाम स्नैप होता है एंड एनमैट मैट होते हैं. करेक्ट, सो आपका कॉन्फिडेंस इतना टूट जाता है यहाँ पे कि आप ये 2 बाकी एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर ही नहीं पाते. देयर आर मल्टीपल अदर एग्जाम्स एज वेल, सीईटी हो गया, सीमैट हो गया, जिसके थ्रू भी बहुत अच्छे कॉलेजेस है, जैसे जीबीआईएमएस हो गया, सिडनम हो गया, सिम्बायोसिस है. करेक्ट, एनएमआईएमएस है. सो चूज द करेक्ट एग्जाम. ठीक है, सो इसके लिए हम लोग रिकमेंड करते हैं कि एटलीस्ट टेक 1 मॉक टेस्ट, तब जाके आपको पता चलेगा कि भाई कैट मेरे से होगा, कैट मेरे से होगा या नहीं होगा, स्नैप मेरे से होगा या नहीं होगा, एनमैट मेरे लिए इजी जाएगा या कौन सा एग्जाम इजी है मेरे लिए. करेक्ट, सो दिस इज व्हाट द रिकमेंडेशन फ्रॉम आवर साइड. इफ यू हैव लाइक द वीडियो, आई वुड रिकमेंड please subscribe us for further plans, because we are going to post a series of videos on monthly basis. Okay, we'll give you a list of topics, which topics you should prepare in which month,
and which exams, which mock test you should take in which month. Okay, so you can subscribe us on YouTube for more informative and genuine content. You can also like us on Facebook, follow us on Instagram, and visit us at our website www.tarkashastra.co.in. If you have any question, you can drop the comment in the comment section below, or you can also drop us a message or call us at on these given numbers. Okay guys, thank you and best of luck for your preparation.